440. This is for which post? My lord, two different posts, class 9 and 10 and 11 and 12. 9 and 10 and 11 and 12. टोटल पोस्ट है 37,440 के लिए एडवर्टाइज किया। जी जी। अभी रिजल्ट क्या निकाला है? 80,000, मतलब 80,402। ये कौन सा रिजल्ट है? STET 2019। STET तो परीक्षा वो फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी है या फॉर क्लासिफिकेशन है? As per advertisement, it was for appointment because it says full पद के बराबर। नहीं, पद के बराबर। STET का फुल फॉर्म क्या है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो पास करेंगे उनकी पात्रता बनेगी। जरूरी नहीं है कि वो सब अपॉइंट हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो सब अपॉइंट हो जाए। दैट वुड डिपेंड ऑन फर्दर मोड ऑफ एग्जामिनेशन। I don't know what kind of argument, how are you aggrieved? If the pool has been increased, all right, you can say that you face a tough competition. But पात्रता की वो एडवर्टीजमेंट जो है STET पात्रता डिसाइड करने के लिए है। People who get clearance, who get the certificate of having passed STET, BTET, NET, whatever, they form the pool from where selections are made. Now this examination was not for giving you appointment. This was for achieving the basic requirement for that examination. So you say, how do you say that the pool has increased, thereby adversely affecting your cause? I don't understand. Advertisement clearly stipulates the total number of posts. STET की परीक्षा आपको अपॉइंटमेंट स्ट्रेट अवे तो नहीं दिला रही है ना? जी ना। सिंपल सवाल है। तो जब नहीं दिला रही है तो ये केवल पात्रता की बात है। Has the BPSC or any body violated any rule? But the result is contrary to the terms of advertisement. No urgency. Next, we will wait. My lord, I am putting these questions to you only for assessing the urgency, because matters are to be heard in seriatim. I mean, if you want to queue, you must satisfy the court that the matter is very urgent. That's all. I'm not shutting you out, Mr. Mukesh Kumar. You can argue later. We will see. Yes. Serial number 2.